Hello student, standard 6 English medium, subject maths, chapter number 1, knowing our numbers. Students, already this chapter related some points we have learned about in previous standard. So first point is there ascending order and descending order. Students, in this chapter ascending order, how to arrange the numbers in ascending order. So first, the given number we have to arrange from smallest to greatest number. Students, जो भी हमें नंबर्स दिए उसे हमें क्या करना है, उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर पहले हमें आइडेंटिफाई करना है और बाद में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट उस तरीके से हमें उसे अरेंज करना है. सो फर्स्ट नंबर इज देयर स्मॉलेस्ट एंड द लास्ट नंबर इज देन वी हैव गॉट ग्रेटेस्ट नंबर. नेक्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स arrangement from the greatest to the smallest. जो भी हमने ascending order में numbers लिखे हैं उसे हमें reverse form में लिखना है. That means first we have to write largest number, greatest number, सबसे बड़ा नंबर हमें पहले लिखना है स्टूडेंट्स. आफ्टरवर्ड उससे छोटा नंबर, ऐसे ही हम बड़े से छोटा नंबर लिखते जाएंगे तो उसमें ग्रेटेस्ट नंबर हमें फर्स्ट मिलेगा और लास्ट में हमें स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा. तो ये जो अरेंजमेंट हुई उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. नाउ इट्स रिलेटेड सम एग्जांपल्स हियर. फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order. See, first A 847, 9754, 8320 and last number is 571. Students, here we have to arrange in ascending order. That means first what we have to write? Smallest number. So the smallest number of this number is 571. So here we write 571. Afterward, there its greatest number 847. Then after its greatest 8320 and last सबसे बड़ा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9754 है. सो दिस फॉर्म इज ascending order. Same like that, next question 9801, 25751, 36501 and last 38,802. So now here again first smallest number of this number is 9801 and afterward its greatest number 25,751 and then after 36,501 and at last 38,802 is the greatest number. So this form is ascending order. Okay, got it students? समझ में आया? Now in second number, here we have to arrange descending order. That means
बड़े से छोटा नंबर. So first we have to identify in the following numbers greatest number. First is given 5000, 7500, 85400, 7861. Now in descending order, first greatest number of this number is 85,400. Now afterward its smallest number 7,861. Again its smallest number 7,500, and at last 5,000. So it is the form of descending order. One more example is there: 1,971, 45,300, 45,321. Next 88,715, and last 92,547. So the first greatest number is 92,547. Next its smallest number is 88,715, and then after smallest it's 45,321, and the smallest number of this number is 1971. Now it's a what type of number, students? Descending order. If we arrange any one order, then its reverse we can find easily ascending to descending and descending to ascending orders.